मैं आशीष मोदी, आपका फ्रेंड एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज हम लोग आपको पूरा टूर देने वाले हैं ऑफ द प्रॉपर्टी गंगा प्लैटिनम। आफ्टर सीइंग द एंटायर वीडियो आई कैन गारंटी कि आपके पास में कुछ क्वेरीज नहीं रहेगी, बट अगर कुछ क्वेरीज होती भी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाके हमें अपडेट कीजिए। हमारी टीम या मैं खुद आपको पर्सनली रीच आउट करूंगा टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको जानना है कि गोलगंगा डेवलपमेंट्स खराड़ी के लिए कितना पॉजिटिव है, आगे क्या क्या लॉन्चेस लेके आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। दिस इज द मॉडल ऑफ गंगा प्लैटिनम व्हाट यू आर सीइंग एंड दैट्स हाउ द बिल्डिंग एलिवेशन विल लुक लाइक आफ्टर कंप्लीशन। नाउ लेट्स डिस्कस कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। इट इज वेरी मच क्लोज टू द यूनिटी पार्क फेज 2। इट्स वेरी वेल इन द सेंट्रल खराड़ी लोकेशन ऑफ खराड़ी मार्केट। आप यहाँ से बाकले सिटी बैंक यू कैन एक्चुअली वॉक डाउन। Now let's talk about the project altogether. In this project, there are 2 high-rise towers, and it is in the land parcel of 2 acres approximately. The 2 high-rise towers is going to have a very spacious 3.5 BHK and 4.5 BHK apartments. So now let's talk about the sizes of the apartment. For 3.5 BHK, the carpet area is 1430 square feet of the apartment. For 4.5 BHK, the carpet area is 1902 square feet. There are also few exclusive apartment in the property which is named as a garden apartment and penthouses, and the sizes for them are: the garden apartment of 3.5 BHK is with a carpet area of 1562 square feet, and for 4.5 BHK it's with a carpet area of 3025 square feet. For the penthouses, the sizes are: for 5.5 BHK penthouses start from with the size of 2642 square feet, and the highest variant is also with the size of 3800 square feet carpet area. On the ground level amenities, we have multi-utility sports court यहाँ पे, kids play area, senior citizen sit out, and the yoga pavilion deck. On the podium level, there is all lifestyle amenities such as swimming pool, lounge deck area, barbecue counter, gymnasium, spa and massage room. So this is a 4.5 BHK apartment. The carpet area is 1902. We are entering the foyer. The foyer is 11 by 5. Before entering the living, we have the first guest room. The guest bedroom size is 11 by 13. It comes with an attached washroom and a beautiful L-shaped balcony connecting to your living area. So we are entering the living area. The size is 23 by 12. Adjacent to the living is the dining area. The size of the dining is 8 by 6. Along with the living room, you get a beautiful balcony. The living room also has a very beautiful false ceiling. We are providing you false ceiling throughout the apartment, including the washrooms. Opposite to the living room is the kitchen. The size of the kitchen is 10 by 10.5. In the kitchen, we are only providing the platform and the sink. From the kitchen, we enter into a dry balcony. The dry balcony is going to be covered. It's a 10 feet long dry balcony connecting to your kitchen. So we are now at the passage. Let's have a look at the other rooms. This is the 0.5 room. It comes with an attached washroom. So you can convert this room into a puja room or a servant room as per your choice and taste. This is your second guest bedroom. The room size is 11 by 13 again. This comes with a beautiful French window. So to my right is a common washroom. All the washroom sizes are standard 8 by 6. Now we enter into the kids area or the kids room. The size here is 11.5 by 13. This also comes with an attached washroom and has a full size window, French window. This is your master bedroom. The room size is 12 by 16. Here we have introduced a new concept. We have kept the shower area different and the washroom different, and in between we have kept the walk-in wardrobe. So it's a new concept which most of my people have liked. This also comes with an attached balcony which is 12 by 4. कुछ कॉमन क्वेरीज है कस्टमर्स के अबाउट द प्रॉपर्टी। आइए पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेरी है द अप्रोच रोड। द अप्रोच रोड फ्रॉम वेयर यू कम इनसाइड दिस प्रॉपर्टी इज अ बिट नैरो, और इस चक्कर में बहुत लोग शायद प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। इफ़ यू आस्क मी, अप्रोच रोड के बारे में बिल्डर इज प्रॉमिसिंग कि ऑन द डे ऑफ पोजेशन वो आपको कंप्लीट मिलेगा। इररिस्पेक्टिव अगर आप देखोगे वो कंप्लीट नहीं होता है आगे तक, जो कि इसको लिंक करना है आपके प्रॉपर्टी तक होना कंपलसरी है, वो हो ही जाएगा। दूसरा, उस लेन पे सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उस लेन पे आपको ट्रैफिक भी ऐसे बहुत कम आने वाली है। तो आप इस कंसर्न को लेके अपने कोई भी डिसीजन को पीछे मत हटिए।
Second query is the amount of amenity space or the amenities which is given in the property is a bit less. So if you personally ask me, I also agree on that. But अगर आप देखोगे तो 2 एकड़ में सिर्फ 216 अपार्टमेंट्स हैं और कम लोग रहने वाले हैं इन द एंटायर प्रॉपर्टी. सो लैंड भी छोटा है. तो जिस हिसाब से जितना बड़ा लैंड था उस हिसाब से जो बिल्डर ने डिज़ाइन किया है, इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, बिकॉज लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ज़्यादा एमिनिटीज़ दे दी जाती है तो आपको उसको मेंटेन करने में भी बहुत दिक्कत आती है. सो इट इज़ एन आइडियल कॉम्बिनेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़, फ्लैट्स एंड द एमिनिटीज़. सो आप टेंशन फ्री होके अपना कोई भी कॉल यहाँ पे ले सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू लाइक द प्रॉपर्टी और आपको कुछ भी इंटरेस्ट था पहले. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मैजिकल नंबर्स, आई मीन द प्राइसेस. फॉर 3.5 BHK company is quoting 1.84 CR. For 4.5 BHK company is quoting approximately 2.37 CR. On top of it, you have to also pay the floor rise, corpus fund and the maintenance. The rates are totally different as the areas are higher for garden apartment and the penthouses. You will be surprised to know that this project was launched in the month of Feb, and till today the existing customer has got a hike of 15% already. 80% of the inventory is already sold out. Whatever is left right now is few inventories in the Tower A. Very soon the Tower B is getting launched. So if you have any inquiries for the same, plus you have any interest in this property, and if the price range is matching the property requirement, do let us know. We're going to surely help us out in the site visit and for the negotiations too. Thank you so much for watching the entire video. Before you leave the video, please subscribe the channel. It is your own channel, Realty Roof, who helps you when you need a property in the Pune market.